me to discuss, and it's my utmost honor and privilege to introduce our legacy of faculty for today's program. Then Professor Zayed gave this responsibility to me to devise a course which is extended on 36 modules, and Professor Zayed graciously gave me a full autonomy to devise these courses. I tried my level best to cover all the aspects of not only diabetes, starting from the basic pathophysiology and then insulin resistance and then insulin and all that. Now we are in the realm of discussing diabetes complications. So diabetic nephropathy, diabetic chronic kidney disease, end-stage renal disease, they all start with proteinuria. Proteinuria is a surrogate marker not only for the renal disease but also for the cardiovascular. If right now you visit the nephrology unit of Zayed Hospital, you will appreciate that the majority of substances almost 70% are waiting for the stenting or for open heart surgery, they are associated with type 2 diabetes. So, with that note, I would request our panelists to take their seats on the stage. First, I would like to invite Dr. Aizaz, who is the Associate Professor of Nephrology at University of Lahore and Irfan Elahi. Dr. Saqlain, please take your seat on the stage. Similarly, it's my utmost honor and privilege to invite Dr. Irfan Elahi, Assistant Professor of Nephrology at CME Hours, Lahore, or Dr. Irfan Elahi साहब हमारे one of the top-notch family physician, Dr. Khalid साहब के साथ आते हैं हमारे पास मेडिकल कॉलेज में हमारी क्लिनिकल क्लासेस शुरू हुई तो कैजुअलिटी में जो पहली इंफेक्शन मिली तो खालिद साहब के साथ हुई और बहुत कुछ सीखा है एमरजेंसी में और इस साल डॉक्टर खालिद और एक और बात आपके लिए मैं एक डिस्क्लेमर और क्या कहते हैं डिस्क्लोजर आपको दूंगा डिस्क्लेमर कि हम जितने भी अपनी मीटिंग्स और जिन खाना में करते हैं they are also sponsored by Dr. Khalid. Khalid साहब माशाल्लाह लाहौर के टॉप नॉच फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स में आते हैं दैट्स रियली अप्लाइड नाउ अब मैं स्पीकर को जब इनवाइट करूंगा तो मेरा ये दावा है कि मॉडर्न डे नेफ्रोलॉजी में मेरा नहीं ख्याल है कि पंजाब के किसी भी इलाके में जो नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है और नॉट ओनली इन पंजाब आल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो वो ये नहीं कह सकता कि उसने प्रोफेसर एजाज साहब से नहीं सीखा। और मैं बहुत लंबा चौड़ा तारुफ इसलिए नहीं कराऊंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस स्पेशलिटी के लिए ब्रांड बन जाते हैं। तो ही इज नाउ अ ब्रांड इन नेफ्रोलॉजी, टीचर ऑफ द टीचर। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं दे आल्सो आर ब्लेस्ड टू हैव मेरा ये ख्याल है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये उनके बहरामंद ना हुए हो अपनी स्टूडेंट्स। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई नेफ्रोलॉजिस्ट ऐसा है। सो with your applause, it's my utmost honor and privilege to invite Professor Aizaz Ahmed। और मेरे ख्याल में जिस स्टेशन के यहाँ में खड़े होके एक दफ़ा इनको ट्राइब्यूट देना चाहिए, वो इसलिए कि कुछ लोग हमारी मेडिकल फैटर्निटी में ऐसे हैं जो हमारे लिए ना सिर्फ बाइस तकलीफ है बल्कि बाइस फख्र है। वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। सो सर, दिस इज ऑल योर वर्ड्स ऑफ विशेस। Very much, Dr. It's really
matter of pride and honor for me to be here. Thank you very much for a very generous introduction. I have spent quite a few years in this, and when I was told that I have to be here for this talk, I was delighted. Uh, it's a great effort that Pakistan is actually planning in collaboration with Pakistan Society of the World. It really got a boost with Dr. Javed and hence the great efforts to efficient so that the disease mortality and mortality can be contained. I would like to today, as I have been assigned to talk about diabetes and progression from proteinuria to end-stage disease. My talk will be basic one. I will not go into a lot of detail, but we'll try to address most of the common problems that we come across while dealing with diabetic patients. The diabetes, you are all well aware, is on the screen, and the welcome Dr. Tariq Mia. Always there. So I was talking about why the computer goes on, I was talking to you that the way diabetes is going up, we have to consider that in this room, if there are 100 people sitting from 20 to 25 us will be diabetic or will develop diabetes or are already suffering from diabetes. So it's a big challenge for particularly for the underdeveloped or developing countries as compared to
means 50% don't go on actually diet. 233 million. And over 3 in 4 people with diabetes, liver disease, lower filtration of it. Like other 10% of the global health expenditure is spent on diabetes, which is 7 billion. And the way prices are going up, you can well imagine. And if you look at people between 20 and 79 years, then 113 compared to that makes another 370. We will eventually become that. And about 1 million children and adolescents below the age of 20, they have type 1 diabetes. And 1 in 6 live births, that is about 20 million, in factors is affected by hyperglycemia pregnancy. And 4% of people with diabetes. And these people also have. And if you look at so as this burden, you can say, has increased, so has the burden of diabetic kidney disease also. And the patients who are increasing and going towards dialysis, their number is also increasing over several years. And if you go to any dialysis center, as Dr. Zayed, that's 50 to 60% of the people who are undergoing dialysis, they are diabetic. A quarter of them are hypertensive, and about 30%. Actually, the whole burden of dialysis. Mostly, obviously, is we are now the key in the world in diabetes. Now the cost as we move from one to the other, these patients without diabetes, patients with complications, with microvascular complications, or who have macrovascular, or who have both micro as well as macrovascular complications. Cost of treatment goes up too. This background about prevalence of diabetes, we move on to the kidney disease. And if you look at the kidney disease, it is important to understand, we were discussing with Dr. Zayed, that people still go for even creatinine. Previously, when we were students, people used to go for urea. Urea was considered as a marker of kidney. But we know that urea is not the only only it is increased in so many other things. For example, a patient may be dehydrated, a patient may be heart failure, a patient may be having 2%, that blood is going in the blood vessels. Only increase in the urea, but we will not have increase in the creatinine. So we look at the urea to creatinine ratio, and normal ratio is 20 to 1. This is 2 to 6. And if somebody has a urea of 200 and creatinine is 1, then the ratio is 200 to 1. It's not good. This patient is not suffering from kidney failure, although the urea is increased. So it is important that we move away from urea alone and better markers. Then we can talk about creatinine.
But creatinine also over the years we have come to know that creatinine alone is not enough to estimate. We have to look at the patient's weight, patient's age, patient's lab factors which contribute to estimation of the kidney function and estimated GFR or eGFR has been marked as kidney. And there are formulas now available which you can download in your mobile application. You just put the patient's age and patient's sex and and then from that, just putting in these values, you can calculate the section here. And you will find now most of the labs, when they give RFP results, they also give the eGFR. And if you look at the normal value which they write on the normal column, they write eGFR more than 60 ml. Why 60 ml? When we know that GFR is normally 100 to 120 ml per minute, why do they write? Because as we age, we tend to lose our GFR. Our kidneys become old, kidneys bude. So for every decade, we lose about 10% of the kidney. If somebody is 20 years old and he has a GFR of 100, by the time that person goes to the age of 60, in another 40 years, he will lose 40% of it. In majority, not in all, in majority. So by the time he is 60 years old, his GFR would have dropped down to 60. That's why they cut off. Well, just that you have to look at the age. And this is important why GFR is important, because student creatinine, this person is very thin, he has no muscle in his body, and then he is not producing enough creatinine. If a 40 kilo person or a female, 40 kilo thin woman is 70 years old, maybe with a normal creatinine, they have a GFR of 30. And an 85 or 90 kilo person of the same age, with the creatinine of 10, they have a GFR. So we have to start thinking in terms of GFR, and we talk about it. And then based on that GFR, the kidney failure has been, kidney disease, now we call it chronic kidney disease, has been divided into various stages or grades. You can say grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, and grade 5. Now, if the GFR is more than 90, with respect to that, and everybody should have, and there is some evidence of some structural damage in that person, but the GFR is more than 90. But this patient will also still be called chronic kidney disease, belonging to category 1. GFR is more than 90, but the patient has some evidence of some kind of damage in the kidney. For example, patient has polycystic kidney, but his kidney GFR is more than 90. Patient has proteinuria, but his GFR is high. Patient has hematuria, but patient kidney function GFR is 14. Or patient has a well-functioning kidney transplant, is giving you more than that. But patient has chronic. So these patients should fall in B1 or the grade 1 or CKD1. But their GFR is normal, more than that. But they have some evidence. उसका आधा किडनी निकाल दिया या उसका बाय बर्थ टेस्ट किया, लेकिन उसका GFR now if the GFR falls by another 30 millimeters, 30 ml per minute, that is from 90 to 60 roughly, then it will be called CKD2. And if the
GFR is from 60 to 30, another 30 का drop. So this is CKD 3. और इसको हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं, A and B 15-15. कि अगर वो 60 से 45 है तो वो A हो जाएगा और 45 से 40 है तो B हो जाएगा. And then CKD 4 when it is between 15. And when it is less than 15, then we call it CKD 5. So majority of the cases that you will generally come across who have history of diabetes, they would have the majority are facing hypertension. Majority, but some may have good. So these are the grades on the left side. So every patient, if you that you come across, you should try to put it in one of these steps. How to put it there? When the person and the steps of the person put this in the formula, it is easily available from the lab. You can store it in your mobile phone. Just put the value. Estimated. He means estimate. आप एग्जैक्ट तो नहीं कर रहे हैं, आप इनमें डाल के और वो 24 घंटे की ट्रैकिंग करें तो नहीं मेजर कर रहे हैं, आप एक अंदाजा लगा एस्टिमेटेड. इट इज अ वेरी गुड एस्टिमेट. So you will know that normal GFR is 100, how much is good for us. तो पहला काम ये करना है हर पेशेंट को कैटेगराइज करना. क्योंकि अगर एक पेशेंट 80 साल का है, उसका GFR 35 है, तो उसको आपने कितनी डोज देनी एंटीबायोटिक की, और जो एक जिसका GFR 120 है उसको कितनी डोज, या उसको पेन किलर कौन से देने हैं, कौन से अच्छी तो पहले उसको तोलेंगे ना आप किसी निजाम में किसी आर्टिस्ट को तोलेंगे. Then you will move on to the treatment. Now, apart from this classification, the other classification is depending upon the degree of proteinuria. If the proteinuria is A1, A2, or A3 categories, that is, if it is less than 30 milligram per gram or millimole of then it is A1. If it is between 30 and 300, it is A2, and if it is more than 300 milligrams per mole, then it is A3. So, depending upon the severity of proteinuria, CKD1, CKD3, A3, or CKD3, A1, that how much is the proteinuria. Any questions? Yes, yes. This is CKD, not diabetic, no problem. This is CKD classification. Chronic kidney disease. We used to call it DRF. Now we call it CKD. Because failure is when you are suffering. And the other thing that I have talked about is the importance of urea to therapy. This is a very frequently asked question. Because patients, when they come to know that they are in the 4 or 5, so you give them a prescription, they come back and say, the doctor, you know the creatinine is a bulking.
दो थी, इस दफा 2.2 हो गई, और 2 महीने बाद फिर आता है 2.5 हो गई। तो आप उसको बताते हैं कि तुम्हारी उम्र तो बढ़ने से नहीं रुक गई, या तो तुम्हारी उम्र बढ़ने से रुक गई हो, या तुम जवान होना शुरू हो गए हो, you started becoming young, so your creatinine will start moving that way. Because this decline in GFR is related to the duration of diabetes that you are suffering, and it is related to the micro and macrovascular structural changes, which will progress with the passage of time and will not reverse. Only thing you can do is slow down the progress of kidney disease. You can, अगर वो उसका 1 साल में 10% GFR ड्रॉप हो, तो आप उसको 5 पे ले आएंगे, 4 पे ले आएंगे, 30 करके। आप उसको रोक नहीं सकते, because normally if you are not diabetic or hypertensive, even then your kidney function goes down by 40% by the time you are 60 years old. तो वो तो एक एजिंग है ना ऑर्गन की, एक डिक्लाइन. The only thing that is reversible is an acute factor, and that acute factor you have to find in the patient. Is it his uncontrolled blood sugar? Is it his blood pressure? Is it the use of painkillers? Only 15 minutes ago we discussed with one of the colleagues sitting here that his creatinine in May was 1.1, and today his creatinine is 1.3. So if you look at it, there is a 30% decline in kidney function. One say 1.3 हो गई, so 30% decline हो गई. 30% decline in 2 months is abnormal. Normally the kidney function will deteriorate around 1% every year. So in 1 year, about 10% GFR will drop. So now you have to look for a reversible factor in that case. What happened? What did you do? Did you take a painkiller? You said yes. I took naproxen for 10 because my big toe was hurt. Because of uric acid, which is uric acid also precipitates, and we will discuss what is the role of uric acid in diabetes. And so you have to look for a reversible factor. The structural changes on the ultrasound or in the body will not reverse. Patients, even when they reach end-stage kidney disease, their kidneys look normal. If you do their ultrasound, just like normal. It is the microvascular changes. It is thickening of the basement membrane. You can't see on it. So even patients on dialysis who are suffering from diabetes, if you do their ultrasound, you find that the kidney will look like normal, or maybe slightly increased. So so how do you expect this thing to happen, that the patient will start reversing it? You will not. Only the two elements: diarrhea, wrong thing, medication, painkiller, heart failure, some other abnormal blood pressure, glucose control, something else you have to look at. Diarrhea, so that is called an acute on chronic, AKI, acute kidney disease on chronic. So diabetes is a vascular disease. So we all worry. That's why we worry about stroke. We worry about kidney failure. We worry about amputation. We worry about heart disease, nephropathy. So who will develop diabetic nephropathy? There are so many diabetics. Not everybody develops diabetes. Who will develop diabetes? There is to be genetic predisposition. Sometimes one brother had diabetes, he went on dialysis, he died of stroke or MI or kidney failure, has been on dialysis. So it is likely that there is a genetic predisposition, and other siblings may also have the same fate if they don't take care of their diabetes well in time.
hypertension aggravates situation in diabetic retinopathy. Smoking. Smoking is not alone linked to heart disease or coronary artery disease. Smoking leads to progression of kidney disease. So smoking is contraindicated. It is absolutely, it should be stopped if the patient has kidney involvement due to diabetes. Obesity. Obesity is a pro-inflammatory state in the body, and it's an extra burden on the organs. Patient जो होता है वो उसकी हाइट होती है 5.5 फुट, उसका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 5.5 फुट पे कितना वजन होना चाहिए मेल का? यानी 5 फीट के लिए अगर मेल है तो 110 पाउंड, और अगर फीमेल है 5 फीट की तो उसके लिए 100 पाउंड। और उसके बाद जितने इंच हैं उसके लिए हर इंच के लिए आप एक इंच के लिए 5 पाउंड ऐड करते हैं। अगर 5 फुट 5 इंच का है मेल है तो 110 तो 5 फुट के हो गए, और 25 पाउंड 25 पाउंड उसके जो है वो उसे 110 में ऐड कर, तो 135 पाउंड उसका वजन होना चाहिए। डिवाइडेड बाय 2.2 से आप डिवाइड कर लें तो किलोज आ जाए, तो दैट इज द आइडियल बॉडी वेट फॉर दैट। दिस इज सिंपल फार्मूला। औरत है 5 फुट की तो 100 पाउंड, मर्द है तो 110 पाउंड, और हर इंच के लिए 5 पाउंड। तो अगर एक 5.5 फुट का बंदा है मेरे जैसा छोटे कद का, तो उसका वजन जो है वो हार्डली 64 किलो या इतना होना चाहिए, लेकिन वो उसका वजन होता है 95 किलो। तो his organs are now under a lot of stress. So whatever muscle or body is producing creatinine and urea, that is an extra burden on the body. So it is very important to tell the patient that what's your weight, what's your weight. Then glycemic control. If glycemic control is good, then there is a 9% risk of going on end-stage renal disease as compared to a poor glycemic control where ESRD may be in 40% of diabetics, ESRD and stage renal disease. Then increased GFR and intraglomerular hypertension. Normally when there is high glucose, that the glycosuria occurs and this increases the GFR. And in the early stages of diabetes, glucagon, growth hormone, other hormones, other factors increase the GFR. So a patient who becomes diabetic in the initial stages, his GFR becomes supernormal. The day that diabetes is diagnosed, his GFR is supernormal. It is 140, it is 160. And this hyperfiltration increase is causing problems. So, and if his blood pressure is high, then pressure in the glomerulus is also high, very light. So intraglomerular hypertension and increased GFR are risk factors for obesity can give rise to increased GFR. Or if the person has one kidney knocked out, the other kidney will have to hyperfilter. So that hyperfiltration. And then increased certain pathways like fluorine activity, sodium lithium co-transport and sodium hydrogen counter-transport. These factors may predispose to. Now we will talk about the natural history of diabetic nephropathy. That from onset of diabetes to, this is typical for a type 1 diabetic. It may take about 25 years for him to reach end-stage kidney disease. Starting with onset of diabetes, within 2, and now here you have increased GFR and you have reversible albuminuria, and the kidney size increases slightly. So in early stages, if you do an ultrasound, you may find very nice looking healthy kidney. And then 2 to 5 years, early nephropathy will start appearing. There will be some structural changes, some thickening of basement membrane, and some microalbuminuria may start after between 5 and 10 years. And after 10 years,
overt proteinuria starts. We will discuss this, what does it mean. And then after 13 or 25 years, the serum creatinine begins to rise, and the next about 5 to 10 years, 5 years, this patient develops end-stage kidney disease. So mechanisms of hyperfiltration. Now we will focus more on the glomerulus in next few slides. That what is happening in the glomerulus of the kidney diabetic. You know, there is an afferent arteriole and there is an efferent arteriole. And whatever pressure comes through the afferent goes to the Bowman's capsule, to the Bowman space, and then to the efferent. So dilatation of the afferent arteriole or increased GFR or increased mesangial matrix accumulation or growth factors, protein kinase C activity, increased tubular sodium reabsorption and tubuloglomerular feedback, transforming growth factors beta. Now these growth factors start coming into action. These adhesion molecules, these start coming. This is what is happening at the cellular level. So if somebody has now started leaking proteinuria, it will damage the heparan sulfate, which is a component of the ESRD. And this heparan sulfate is negatively charged. And if albumin, if you look at albumin, this is also negatively charged. So if there is, normally they will repel each other. But if there is opposite charge, then the protein will be attracted towards the glomerulus. So this leads to leakage of protein to microalbuminuria, and loss of sulfate allows the increase in filtration of albumin. So this is one mechanism that is happening. The other mechanism that is happening responsible for proteinuria is that the carbohydrate and protein metabolisms, they interact with each other through different pathways and through the polyol pathway. And this leads to the release of free oxygen radicals and formation of advanced glycosylation end products. We call AGE, age. So formation of age. Change in the charge in the basement membrane and formation of advanced glycosylation and products which damage the blood vessels in the glomerulus. Remember, diabetes is a vascular disease, and there are a lot of capillaries in the glomerulus. Now, this slide also shows the afferent arteriole, and it shows the Bowman's space here capsule and the efferent arteriole. And there are factors which are working on the afferent arteriole. And anyhow, you can see that smoking, hyperlipidemia, high protein intake, these affect the afferent arteriole and increase the blood pressure. If the blood pressure in the afferent is increased, what will it do? It will increase the filtration pressure in the Bowman's space. So more protein will leak into the urine. And on the efferent side, we know that angiotensin II works more on the efferent. It also works on the afferent, but it has more effects on the efferent arteriole. And it can constrict the efferent arteriole. तो क्या effect होगा इसका? हम अगली slide में देखते हैं. If you look at the afferent and efferent, and you look at the renal blood flow and renal plasma collection, if you constrict the afferent, इसमें कम blood जाएगा. So here in A, we have constricted the afferent. If you look at the slide B, now what we have done, we have constricted the efferent arteriole.
अब क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है ये बढ़ जाएगा, GFR बढ़ जाएगा। अब जो कुछ किडनी में हो रहा है वो एफरेंट और इफरेंट का इंटरप्ले, ये कितनी सिकुड़ रही है, ये कितनी सिकुड़ रही है, ये कितनी फैल रही है, ये कितनी फैल रही है, और उससे आपका फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब यहाँ आप देखते हैं कि जब आपने इसको डायलेट किया इफरेंट को, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस, आउटफ्लो रेजिस्टेंस कम हो गया। जब आउटफ्लो रेजिस्टेंस कम होगा तो मोर ब्लड विल फ्लो इनटू द किडनी, क्योंकि अब उसको आगे से रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, इफरेंट को डायलेट कर दिया। So more, so there is the blood flow will increase, but because of this dilatation, the pressure in the glomerular capillary will decrease. GFR जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन blood flow overall to other nephrons and other blood flow increase हो जाएगा. So you can see, and then if you dilate the afferent, then you will have increased GFR. And you will have increased blood without affecting this. यहाँ आपने इसको dilate किया. So this is what is happening in the kidney. If somebody has renal artery stenosis, then less blood is going to that. So there will be less hyperfiltration. There will be less GFR. There will be less leakage of protein. क्योंकि intraglomerular pressure जो यहाँ पे इसके अंदर जो कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर है, this will determine how much protein will leak into the urine. So when you are giving an ACE inhibitor or an angiotensin receptor blocker, it is selectively vasodilating the efferent artery, because that is where the angiotensin 2 acts. So with the result that after जो रेजिस्टेंस, आउटफ्लो रेजिस्टेंस वो कम हो जाएगा एस इनहिबिटर देने से या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, तो ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, लेकिन फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाएगा, तो लेस प्रोटीन विल लीक. ठीक है ना, ब्लड फ्लो बढ़ गया है लेकिन प्रेशर ग्लोमेरुलस के अंदर कम हो गया, उससे प्रोटीन की लीकेज कम हो जाएगी. दैट इज हाउ द एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एक्ट, that this selectively vasodilate the efferent artery. ठीक है, अब जब भी आप दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे तो आप इस चीज को ज़हन में रखें. अब क्या होता है डायबिटिक्स में, ये नॉर्मल है, एफरेंट को देखें, इफरेंट को देखें, और डायबिटीज में देखें कि इफरेंट जो है वो कंस्ट्रिक्ट हुई है, तो क्या होगा, देयर विल बी मोर लीकेज ऑफ प्रोटीन. अब यहाँ प्रेशर बढ़ गया, there will be more leakage of protein into the lumen. Or then you look at the ACE inhibitor, where you have dilated in a diabetic patient, you have given an ACE inhibitor, it has now vasodilated the efferent arteriole, reducing the filtration in the glomerulus, therefore reducing protein. Is it clear? कोई इसमें क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्यूटी है? उसकी भी हम बात करेंगे कि कब आपने रोकना है और कब स्टार्ट करना है. बेहतरीन. आप you can actually give ACE inhibitor or angiotensin receptor at every stage, provided it does not reduce the pressure so much in the glomerulus. ठीक है ना, एक तो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है ना, किसी का 200 है उसको तो आपने नीचे करना ही करना. हम बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ ACE inhibitors, ARBs in glomerular level, in the intraglomerular hypertension, that now you want to reduce the filtration pressure in the glomerular capillary, and for that you will give a dose. You start with a small dose and see that the GFR is not drastically reduced. We know it will reduce the GFR. It is not drastically reduced that it will affect the creatinine level value. If creatinine goes out up by 10%, 20%, doesn't matter. Continue with that. Or if there is no hyperkalemia. But if it increases by 30%,
then you have to stop the ACE inhibitor or angiotensin receptor because now you are compromising too much on the GFR. Patient may become uremic, may develop symptoms. So whenever you give ACE inhibitor or ARB, you look at the GFR and you see that it doesn't fall more than, the creatinine does not fall by more than 30%. Or a hyperkalemia if it develops, then you stop it. अब early stages में तो hyperfiltration है ना, उसको आपने, it's like giving a beta blocker to a patient who has heart disease and has tachycardia, right? His heart rate is 120, so he'll get angina. So you give him a beta blocker, you take out the sympathetic drive from there, and ACE inhibitor and ARBs take away the sympathetic drive also. They are anti-adrenergic as well. So they will reduce the proteinuria and the effect of sympathetic tone on the afferent artery. So that will also help blood flow. So similarly in heart disease, उसका heart अगर 120 पे चल रहा है, तो आप उसको कहते हैं भाई तुम बीटा ब्लॉकर खाओ ताकि तुम्हें angina, तुम उसका heart rate 60 पे ले आते हो, नॉर्मल 80 है, आप 60 पे ले आते हो, क्यों ले आते हो 60? तो उसकी लाइफ बढ़े. सिमिलरली एक किडनी जो 130 या 140 GFR पे हाइपरफिल्ट्रेशन इंजरी हो रही है, आप उसको एस इनहिबिटर या ARB दे के उसका GFR 70 पे ले आते ताकि किडनी की लाइफ बढ़े, उसको ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस ना हो जाए हाइपरफिल्ट्रेशन की वजह से. इज इट क्लियर? So there are various factors which are affecting the afferent, the nitric oxide bioavailability, the vascular factors, sympathetic tone, angiotensin 1, hyperinsulinemia, tubular signals, inhibition of transforming growth factor, and on the efferent there is angiotensin 2 right on the top, and then thromboxane A2 and endothelin, which is a vasoconstrictor, and the reactive oxygen species. So this you have to always keep in mind when you are treating these patients, diabetes or any proteinuria, regardless of what the cause is. Even hypertensive patients will benefit. So I think I will not involve you. This is hyperglycemia, and this when hyperglycemia, when the glycolytic pathway is disturbed, then there's more of polyol pathway which comes into action, and this leads to activation of polyol pathway and protein kinase C activation, and then glycosylation of the formation of the advanced glycosylation end products, and all these leads to through inflammatory markers and through other circulating cytokines which are released because of this leads to damage to the glomerulus, and growth factors and nuclear factor kappa B and others that I will not bore you with that cellular mechanisms that, but few things you must know that what is the role of these, and see that this will lead to certain fibrosis in the kidney. In the interstitium of the kidney, there will be fibrosis and glomerulosclerosis. So this is the protein kinase C activation, and normally protein C helps and it maintains the glomerular basement membrane and podocyte foot process function. But if there is protein C is not activated, then it leads to proteinuria in the urinary space. And you can see a transformation of the, if you look at the cells of the tubule, which is going to absorb all of this protein. This protein, when it is filtered, it is taken up by the tubular cells, and tubular cells engulf this protein and give it back to the body, or leak it out. And there is a transformation of this epithelium of the capillaries into other type of cells, which eventually become fibroblastic and cause fibrosis in the kidney. So that is how the diabetic nephropathy at the cellular level progresses,
and leads to end-stage kidney disease. Uric acid and fructose, and one of the colleagues sitting here was talking about uric acid. And we now know that uric acid is also linked to diabetes in a way that uric acid may have a role in the pathogenesis of diabetes and diabetic nephropathy. It is generated through the metabolism of fructose and induces oxidative stress in the mitochondria. And if you, apart from the dietary sources of fructose, there is evidence that the diabetic patients generate fructose in the kidney. And once they produce it in the kidney, it leads to oxidative stress, and that may mediate renal. So there have been pilot studies which has reported that if you give allopurinol or Zytoric to these people, then there is a reduction in the protein. So there is a link people are trying to find with the uric acid and its management. पहले तो ये था ना कि जी वो जो रूमेटोलॉजी एसोसिएशंस की जो गाइडलाइंस बनी है, कोई कहता है 6 है तो आप मत ट्रीट करें, कोई कहता है ये नहीं है तो वो नहीं. Those guidelines are for joints and for other things. But what is uric acid doing? The flow inflammatory cytokines and the release of inflammatory mediators that it is doing. There is a role that is coming up, and now पहले तो कहते थे 10 तक यूरिक एसिड है तो रीनल फेलियर है. तो यूरिक एसिड goes up either by increased formation or by decreased excretion, and it is mainly decreased excretion which is responsible in majority of people, which leads to hyperuricemia. Increased formation उतना बड़ा factor नहीं है, जितना बड़ा factor decreased excretion of uric acid. तो पहले कहते थे 10 से ऊपर है, कोई जॉइंट पेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो पता है हमें कि क्रेटिनिन बढ़ी हुई है, यूरिया बढ़ा हुआ है, किडनी कॉम्प्रोमाइज है, वो नहीं एक्सक्रीट कर रहा. बट नाउ वी नो दैट इट हैज सर्टेन disadvantages, and diabetic patients through fructose also induce this kind of injury to the cells. वो फ्रुक्टोज की डिग्रेडेशन जब होती है उसमें यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है थ्रू दी नॉन डिफरेंट पाथवेज है ना. उधर से भी होता है, उधर से भी होता है. जो प्रोटीन्स आप वो तो होता ही है, वो तो दैट इज वेल नोन, बट दीज आर एडिशनल फाइंडिंग्स not in normal. In diabetics it has been seen in that. Okay, now from there we move on to the stages of diabetic nephropathy, that how we classify diabetic nephropathy into different stages. First stage is stage of hyperfiltration and hypertrophy. यानी जैसे ही मरीज डायबिटिक होता है तो उसका जीएफआर सुपर नॉर्मल, आप उसका कराएं, उसका जीएफआर 135, 36, 40 आएगा, क्रेटिनिन 0.56, और उसको हाइपरग्लाइसीमिया है जो कि कर रहा है, उसका जीएफआर बढ़ा रहा है. तो ग्रोथ हार्मोन है, उसका ग्लूकागोन है, उसके डिफरेंट और मीडिएटर्स हैं जिन्होंने जीएफआर को बढ़ाया. सो दिस लीड्स टू स्टेज ऑफ हाइपरफिल्ट्रेशन एंड हाइपरट्रोफी. दिस इज स्टेज. द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड साइलेंट स्टेज. अब इसमें क्या हो रहा है कि वो सुपर नॉर्मल से नॉर्मल में आ रहा है. अगर पहले किडनी साइज बड़ा था तो अब नॉर्मल हो, एक्चुअली वो स्टेज 2 में चला गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस आने चाहिए. और स्टेज 3 वो स्टेज है व्हेन देयर इज माइक्रोएल्ब्यूमिन. अब नॉर्मली we all excrete about 20 to 30 milligrams of albumin in the urine, and we excrete the TAM horsefall protein, the tubular protein, certain glycoproteins. We also excrete them in the urine. So normally about 150 milligram of protein a normal healthy person excretes in the urine per day, per 24 hours. And normally a healthy person excretes about 1500 milligrams of creatinine in the urine. जो आप खाते हैं
वो 1500 मिलीग्राम क्रिएटिनिन यूरिन में नॉर्मली खारिज हो। I'm coming to that. So a normal person is excreting 150 milligram protein, out of which albumin is 20 to 30 milligram. The rest are other proteins which are locally produced by the tubules and collecting ducts and other structures in the kidney. And normally the person is excreting 1500 milligrams of creatinine. So what will be the ratio of protein to creatinine? 150 divided by 1500. It is 0.1. ठीक है, 150 तकसीम 1500 is 0.1. So the normal protein, spot protein to creatinine ratio is 0.1. But up to 0.2, it is considered normal. So one thing you can do is do a 24-hour urine sample. कि आप मरीज को कहें 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करो, which is cumbersome. और उसमें भी वही आएगी रेशो 150 और 1500. तो दूसरा ये कि आप एक सैंपल ले लें, स्पॉट सैंपल ले लें, उसमें प्रोटीन और क्रिएटिनिन दोनों मेजर करें. स्पॉट यूरिन फॉर प्रोटीन, स्पॉट यूरिन फॉर क्रिएटिनिन. एक करने से कुछ नहीं पता लगेगा. So you take one spot sample of urine protein and spot sample of creatinine. अब उसमें प्रोटीन आ रही है 50 एक सैंपल में और क्रिएटिनिन आ रही है 200. तो क्या होगी रेशियो? 1/4, 0.25 होगी. ठीक है. So this is how you detect the protein in the urine. Now normally up to 500 milligram protein you can't detect on the dipstick. If you do a normal urine test, वो अगर 500 से कम है तो उसमें नहीं आएगा. अगर वो 300 तक हो जाए, यानी एल्ब्यूमिन की अगर खाली बात करें तो 30 से लेके 300 के दरमियान होगा, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन. दैट इज नॉट डिटेक्टेड बाय द dipstick. तो आप फिर स्पॉट यूरिन एल्ब्यूमिन और स्पॉट यूरिन क्रिएटिनिन कराते हैं उसकी रेशियो. ठीक है. तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया स्टेज 3 वो स्टेज है जिसमें पेशेंट को माइक्रो एल्ब्यूमिन आनी चाहिए. उसका यूरिन नॉर्मल होगा, आप उसका यूरिन टेस्ट कराएंगे, देयर विल बी नो प्रोटीन यूरिन, बट यू हैव टू स्पेसिफिकली ऑर्डर फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन और यू हैव टू चेक द रेशियो ऑफ प्रोटीन टू क्रिएटिनिन. तो वो डिपस्टिक 500 से ऊपर जब प्रोटीन होती है तो फिर वो ट्रेस लेना शुरू करती है, और 1000 होगी तो 1+ हो जाएगी, 1500 2+, 3000 2+. वो 30 से 300 तक जो है ना वो माइक्रो एल्ब्यूमिन में आ जाता है. अगर लेस देन 30 है पर ग्राम ऑफ क्रिएटिनिन तो काफी. आप यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो करा लें, वो 30 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ क्रिएटिनिन से अगर ज्यादा है तो अगर उससे कम है. पहले तो माइक्राल स्टिक्स आती थी, माइक्राल AL फॉर एल्ब्यूमिन, वो डिप करें तो वो उससे वो बताती थी कि माइक्रो एल्ब्यूमिन. वो आपको आम यूरिन टेस्ट में नहीं आएगी. तो इफ यू वांट टू डिटेक्ट प्रोटीनूरिया एट ए वेरी अर्ली स्टेज यू आस्क फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन. Or you can do a ratio to that is protein and creatinine. Is it clear? आपके सवाल का जवाब आ गया? Okay. And then stage 4 is the stage of overt proteinuria. अब आपकी डिपस्टिक बताती है कि पेशेंट को प्रोटीन आ रही है. अब तो वो स्टेज 4 में आ गया. जब उसके यूरिन में प्रोटीन आ गई है, now this patient is in stage 4 of diabetic nephropathy. And depending upon the GFR of that person, it is early, intermediate or late. और अगर वो उसकी GFR 15 से भी नीचे चली गई है, तो then it is
एंड स्टेज किडनी। creatinine. So there is 1, 2, 3, 4, and 5 stages of diabetic nephropathy. This is different from classification of CKD, which we discussed earlier, which is only GFR based. This is something which is different. Stage of hyperfiltration, hypertrophy, then incipient stage or silent stage, जब वो आसमान से उतर के जमीन पे आता है, सुपर नॉर्मल से स्टेज 2 हो गया, और फिर जब थोड़ी थोड़ी प्रोटीन लीक होती है, माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया स्टेज 3, एंड देन जब ओवर्ट प्रोटीन यूरिया आ गया उसके डिपस्टिक पे यूरिन में आ गया तो स्टेज 4 डायबिटिक नेफ्रोपैथी। फिर आप उसका जीएफआर देखें कि वो 110 से 70 है या 70 से 30 या 30 से 15, तो फिर आप उसको क्लासिफाई कर लें 3 स्टेजेस, एंड देन if it is less than 15 then it's already. Is it clear? It is reversible up to stage 3. You can, if you give ACE inhibitor, you good glycemic control, blood pressure less than 130/80, then you can actually reverse this microalbuminuria into. Although some structural changes have taken place, there is some thickening of the vessel, but you have reduced the GFR. So if you reduce the GFR by selectively vasodilating the which arteriole? Efferent arteriole, and reducing the intraglomerular filtration pressure in the capillary, you have actually stopped the microalbuminuria to go into the tubules and damage the tubules and change the epithelium of the tubule into through transforming growth factors and other pathways that I have talked about into fibroblasts and other fibrosis. Is it clear? क्योंकि वो जो प्रोटीन लीक होती है वो उसको फिर वो सेल पिकअप कर लेता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन वो उसने उठा लेनी होती है वो प्रोटीन, तो वो सेल डैमेज होना शुरू हो जाता है. Those who have proteinuria, those who have hypertension, you should do that. Not every patient will have that. Role of ACE inhibitors and ARBs in normoproteinuric, normotensive blood pressure patients is controversial, but you may have benefit elsewhere. Patient को MI हुई भी तो उसका LV पुअर है तो वहां तो फायदा होगा, या उसको स्ट्रोक हो गई थी तो उसकी स्ट्रोक की रिकरेंस को रोकने के लिए तो ACE इनहिबिटर का फायदा होगा. ACE इनहिबिटर सिर्फ किडनी पे तो काम नहीं करता, उसके बेनिफिट स्ट्रोक में है, MI में है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग में है, हर जगह ये रिसेप्टर्स होते हैं, यूट्रस में भी होते हैं, ब्रेन में भी होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में होते हैं ये रिसेप्टर. So this is supernormal GFR, stage 1. Kidneys increase in size, increase glomerular size. It is present at the time of diagnosis, stage 1. Stage 2, hyperfiltration stage starts to decline. अब normal हो जाए, 150 से 100 पे आ जाए. Intermittent microalbuminuria, slight mesangial expansion, glomerular basement membrane thickening, and 5 to 7 years down the diabetes duration. Stage 3, persistent microalbuminuria, mesangial expansion, basement membrane thickening, blood pressure starts to rise, diabetic retinopathy starts. अब वही capillaries जो kidney में हैं, वही capillaries retina पे भी हैं. So if you look at the fundus and you find changes there, that there is background retinopathy or there is proliferative retina, you are sure that this patient has diabetic nephropathy now. So यूरिन प्रोटीन और आंख का मुआयना बड़ा कुछ बता देती है. अगर यूरिन में प्रोटीन है तो इसका मतलब एंडोथेलियल इंजरी तो हो गई है, तो इसका मतलब कॉर्नरी आर्टरीज भी अंदर से उड़ गई. तो यूरिन एग्जामिनेशन प्रोटीन यूरिया प्रिडिक्ट्स और इट आइडेंटिफाइज साइलेंट एंडोथेलियल
disease or coronary artery disease, silent coronary artery disease is diagnosed. ठीक है, उसको सिम्टम्स नहीं है, एंजाइना नहीं होता, लेकिन उसको एथेरोस्क्लेरोसिस तो हो गया, उसकी कॉर्नरी तो नैरो हो चुकी है। जिस दिन 80% से ऊपर बंद हो जाएगी उस दिन MI होगी। एंजियम क्या होता है? किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, कैपिलरीज होती है, उन कैपिलरीज को जो चीज आपस में पकड़ के रखती है, जो टिश्यू, उसको मेसेंजियम कहते हैं। उसके अलावा ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके अलावा ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलाई, ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्स, लिम्फेटिक्स, नर्व्स वगैरह जो भी चीजें बाकी, वेन्स, आर्टरी। तो जैसे एक अंगूर का गुच्छा है, तो अंगूर लगे हुए हैं, जिस चीज के ऊपर वो अंगूर चिपके हुए हैं, जो उसकी डंडियां हैं, वो इंटरस्टिशियम समझ लेना। ठीक है, इंटरस्टिशियम इज एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू। कई मरीजों को आप देते हैं रिफेम्पिसिन, उनको इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाता है, उनका इंटरस्टिशियम खराब होता है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट वास्कुलाइटिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। बहुत से ऑर्गन्स है ना किडनी के अंदर, वो हर एक की कोई इंपॉर्टेंस है, उसका कोई फंक्शन। तो ट्यूब्यूल्स को, ग्लोमेरुलाई को जो पकड़ के रखता है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बीच में जो ये नजर आ रहा है आपको, ये कैपिलरी लूप्स हैं, और ये बीच में जो पिंकिश स्टेन हुआ है, ये वो मेसेंजियम है जो जो पकड़ के रखता है, और इंटरस्टिशियम वो है जो ट्यूब्यूल्स वगैरह के दरमियान जो। So it takes about 7 to 15 years of diabetes to develop stage 2. और स्टेज 4 में मैक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया हो जाएगा और ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाएगा, कुछ हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स आ जाएंगी, और 15 to 25 years of a typical type 1 diabetes, और वास्कुलोपैथी और न्यूरोपैथी भी आ सकती है। और स्टेज 5 में बिल्कुल किम्बल स्टील नोड्यूल, वो सारा ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होकर इओसिनोफिलिक नोड्यूल्स बन जाते हैं, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, इसको KW नोड्यूल या किम्बल स्टील विल्सन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है, पेशेंट फ्रैंकली नेफ्रोटिक होता है। अगर 3000 से ज्यादा वो प्रोटीन यूरिया या रेशो जो है वो 3000 तकसीम 1500, वही जो नॉर्मल क्रेटिनिन, 3000 प्रोटीन आ रही है तकसीम 1500 जो क्रेटिनिन है 24 घंटे में, तो रेशो क्या बन गई? 2 बन गई ना। तो रेशो अगर 2 से ऊपर है या प्रोटीन 3500 से ज्यादा है, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ड्यू टू डायबिटीज। सिंड्रोम तब कहते हैं ना जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी होके एक पैटर्न बना दी, उसको सिंड्रोम कहते हैं। उसके कॉजेज बेशुमार होते हैं, जैसे हार्ट फेलियर एक सिंड्रोम है, उसके कॉजेज बेशुमार हैं, किसी को वेल्वुलर है, किसी को कॉर्नरी है, किसी को कार्डियोमायोपैथी है, किसी को कंजेनिटल हार्ट डिसीज। सो अब हम आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। सो हाउ विल यू मैनेज अ पेशेंट विद डायबिटीज? माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया, यूरिन एल्ब्यूमिन मोर देन 30, उसका एडिक्वेट ग्लाइसेमिक कंट्रोल है नहीं है, तो उसकी ग्लूकोज को मैनेज करें ताकि हाइपरफिल्ट्रेशन रुके। ब्लड प्रेशर मोर देन 130 ओवर 85 है तो एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। बीपी अगर कंट्रोल, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं तो फिर आप उसको, इससे क्रेटिनिन बढ़ जाती है, पोटेशियम बढ़ जाता है, रैश हो जाता है, तो मेनी थिंग्स कैन हैपन, तो फिर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पर चलिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर 2 तरह के, कौन कौन से? डाईहाइड्रोपिरिडिन और नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन। नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन में 2 ड्रग्स है, वेरापामिल एंड डिल्टाइजिन। तो आप डिल्टाइजिन जो हर्बेसर है और वेरापामिल जो कैलान के नाम से मिलता है, तो यू कैन मूव टू नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन। व्हाई नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन? आई विल शो यू व्हाई। और अगर क्रेटिनिन मोर देन 3 है तो फिर आप शायद आपको एस इनहिबिटर ARB देने में मुश्किल हो, शायद,
या अगर 30% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए स्टार्ट करने के बाद तो फिर आप मूव कर जाएंगे। और फिर आप राइजिंग क्रेटिनिन है तो आप एडिशनल वर्कअप करें, उसकी चीज़ें देखें, उसका बाकी चीज़ों को कंट्रोल करें। तो अब हम बात करते हैं कि इस डायबिटिक पेशेंट की मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तशखीस हो, पहले डायग्नोसिस होता है कि ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, कोई और बीमारी नहीं। हो सकता है ना वो ही इज नॉट इम्यून टू एनी अदर किडनी डिजीज, हो सकता है उसको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो जाए, हो सकता है उसको एफएसजीएस फोकस सेगमेंटल नर्व्स की वजह से है वो डायबिटिक, लेकिन किडनी में बीमारी कोई और आ गई। हो सकता है उसको हेपेटाइटिस सी नेफ्राइटिस हो गया, तो हो सकता है हेपेटाइटिस बी नेफ्राइटिस हो गया, हो सकता है उसको एमिलोइडोसिस हो गया हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट था वो, डायबिटीज भी थी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, या वो उसने पेन किलर खाए सारी उम्र, उसको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो। तो वी हैव टू सी के डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज एंड डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, उसमें आपको माइक्रोयूरिया मिलेगा, फंडस को देखेंगे और टिपिकल हिस्ट्री होगी 10-15 साल। अगर पेशेंट को आज डायबिटीज हुई है, कल प्रोटीन यूरिया हो गया, तो वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी नहीं, क्योंकि नॉर्मल उसका ये है। और उसमें हमें पता है स्लो डिक्लाइन होगी कि वो 1 साल में 10% उसका जीएफआर का, अगर वो रैपिडली हो रहा है तो कुछ और हो रहा है उसको, समथिंग एल्स इज हैपनिंग। यू लुक फॉर दैट रिवर्सिबल फैक्टर। इज इट सम रॉन्ग ड्रग, पेन किलर, डिहाइड्रेशन, हार्ट फेलियर, some other problem? So after diagnosis of diabetes and diabetic nephropathy, the next important thing is to control the glucose. So HbA1c target 67, you know better actually at what stage of diabetes how much you want to keep, but in advanced kidney disease we are liberal, we up to 7 is good enough, or more than 7 is good. Sulfonylurea drugs, risk of hypoglycemia, metformin should be avoided or given with caution. अब ये हम उसकी भी बात करेंगे कितने जीएफआर पे, बिकॉज दिस इज अ वेरी बर्निंग क्वेश्चन कि एक बंदा ग्लूकोफेज लिख देता है, दूसरा उससे लड़ पड़ता है, ओ हो इसको ग्लूकोफेज लिख दी तुमने, ये तो किडनी का पेशेंट, so what's wrong with it? When to give, when to stop, we will discuss that. ये ग्लिटाजोन्स हैं, ये दी जा सकती हैं because they reverse the insulin resistance, but problem is that they cause edema and water retention. So renal failure may cause a problem. Insulin is preferred therapy, and you have to tailor the dose if the GFR is less. But we will discuss this in detail. Second thing is control of blood pressure, and that is that you have to give low sodium diet. 2 grams means G. हम पूरा ड्रग्स अभी डिस्कस करेंगे, अभी तो ये हम लो सोडियम डाइट, ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, and if they are tolerating, then you go on increasing, maximize the dose so that they get maximum benefit. And then diuretic, if the GFR is more than 50, you can give a thiazide diuretic, जैसे को वाली salts हैं या वो H वाले salts. And if the GFR is less than 50, then you have to add a loop diuretic, because thiazide diuretics are not that good. Long-acting calcium channel blocker, beta blocker, if that is not enough, and then if it is still not controlled, then a long-acting alpha blocker. ACE inhibitor, then it blocks this ACE converts bradykinin into active peptide. And if you are giving an ACE inhibitor, then you are allowing the bradykinin to increase. And bradykinin to its course through the lung gives rise to cough. So patients with ACE inhibitor get cough. But ARBs act at the angiotensin B receptor blocker.
So they bypass this. So there is no cough. So if 81 receptor is blocked, then there is 81 receptors normally give rise to vasoconstriction, salt and water retention, growth stimulation, and disease progression. So this is what you are doing by not giving them, by blocking the 81 receptor. And if you block this, you get 82 receptor stimulation, which leads to vasodilatation, attenuates growth, and disease progression. Is it clear why we use it? And what is the effect on the kidney? We have discussed in detail. So what is the effect of controlling the blood pressure? UKPDS has shown that if you control the blood pressure, then the complications of diabetes are reduced. For every 10 millimeter, 12% risk reduction. So very important. Now, tight blood pressure control preserves GFR in proteinuric patients. इनको protein आ रही है, less than 1 gram, 1 to 3 grams तक, more than 3 grams. In patients में अगर blood pressure low है, there is less proteinuria. Blood pressure is high, there is more proteinuria. So you have to control the blood pressure in order to treat proteinuria. Now, what is the effect of non-dihydropyridine calcium channel blockers, diltiazem and verapamil? Now, if you look at this, proteinuria with dihydropyridine increase, and here it is markedly reduced. In systolic blood pressure, much better with the non-dihydropyridine. With the yellow one is dihydropyridine, no effect on proteinuria. And blood pressure, better on that. So there is benefit in giving non-dihydropyridine because they reduce proteinuria more than dihydropyridine. Now, if you control the blood pressure, the GFR is better maintained. The decline in GFR is more if the blood pressure is more in untreated hypertension. And if the blood pressure is better, 130, then the decline is very little, or kidney function is better. Now, ADA guidelines screening, you annually measure the urine albumin and GFR depending upon the stage. Agar patient theek hai. Otherwise, you have to do it maybe every 2-3 months. Type 1 diabetics, more than 5 years duration, or type 2, starting the diagnosis, and all patients with hypertension. You monitor them, you screen them. Give ACE inhibitors and management. If the GFR is less than 45, then you have to get help from a nephrologist, that he has to guide you what to treat and how to treat. Now, once the microalbuminuria starts, this indicates endothelial damage to the blood vessels, right? So you look at, you screen for heart disease, you screen for vascular disease, peripheral vascular disease भी हो सकती है उसमें. उसकी pulses देखें, optimize blood pressure, optimize lipids, optimize glucose, discourage smoking, investigate for other renal disease, screen for eye disease, monitor the creatinine. This is all you have to do once you have detected microalbuminuria. Big burden, big task to do. Now, if so one thing was glucose control, the other was control of blood pressure. The third thing is control of proteinuria. And proteinuria, if there is more proteinuria, then the change in GFR is much more. If there is less proteinuria, then the kidney function is stable. So this is the importance. These are studies that have confirmed this. Again, intensive glucose control and the advanced trial, the prevent trial, all these trials, and the conventional therapy. In the intensive control, the endpoints of complications are less as compared to conventional. Similarly, in the prevent study, if there is less proteinuria, less than 16 milligrams, then there is better outcome. Cardiovascular events are less. तो जब भी हम इन चीजों की बात करते हैं, अल्टीमेटली तो हम ये देखते हैं ना कि बंदा बचता है कि नहीं बचता.
तो मर जाता है. Cardiovascular outcomes from this, all these trials, in all the drugs, SGLT2, insulin, सब ACE inhibitor, ARB. मकसद ये है कि कार्डियक सेफ्टी कितनी है, बेनिफिट है, सर्वाइवल है, इंप्रूव होता है नहीं होता. So ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में जो पहली स्टडी आई थी रीनाल के नाम से लोसार्टन पे, ये लॉन्च हुई थी, मैंने प्रेजेंट की थी, पुरानी बात है. तो ये दिस हैज क्लियरली शोन बेनिफिट ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स in patients who are diabetic, and their doubling of serum creatinine, their time to dialysis is increased to give them angiotensin. These are the अब इसमें आप इस ग्राफ में देखते हैं कि patients who are getting ACE inhibitors and or angiotensin receptor blockers, they are doing better as compared to patients who are controlling their blood pressure with other drugs which are non-ACE or ARB. So again, this is proven. This has been proven that this helps. Now, if you combine an ACE inhibitor with a non-dihydropyridine, then there is वो एक जमा एक नहीं होता, वो दो नहीं होता, वो 5 हो जाता है. उसका बेनिफिट डबल से ज्यादा हो जाता है. If you combine for blood pressure control, bring it to less than 130/80, you combine with an ACE inhibitor or an ARB, you combine a non-dihydropyridine. Anemia movement. Erythropoietin is not being produced adequately by the kidney, so patient will become anemic. So you have to, as his kidney function declines. And anemia and cardiovascular disease and chronic kidney disease is a vicious cycle. Anemia leads to left ventricular hypertrophy. Left ventricular hypertrophy वाले बंदे को MI होती है तो डिस्रिथमिया से मर जाता है घर पे. जिसको LVH नहीं है उसको MI होती है तो बच जाता है. So anemia leads to LVH. So target hemoglobin plus 11 depending upon stage of kidney failure, but you don't want to bring it to 14 or 15 because it increases the risk of stroke and increases the risk of vascular access closure. You should always check the MCV. Is it low, is it high, or is it not? Erythropoietin deficiency anemia of chronic disease will have a normal MCV. If it is high, then it is B12 or folate deficiency. If it is low, then it is suspected iron deficiency or thalassemia. So the target transferrin saturation, which is iron divided by iron binding capacity. If you divide the iron with PIBC, total iron binding capacity, you get transferrin saturation. And you should have transferrin saturation of 30. And you can use erythropoietin subcutaneously. You can give in dialysis patient folic acid supplements. Now, another thing that happens once there is kidney disease, these patients develop bone disease because vitamin D is not being activated from 1 to 125 dihydroxyfolic acid. So that conversion is not occurring in the kidney, so it leads to bone disease. What happens to the bones? The bones become osteomalacia, osteoporotic, or if you look at, they can develop secondary hyperparathyroidism. The PTH level goes up, and there is sometimes a brown tumor formation can occur, or some extra osseous outside the bone deposition of calcium can occur, or patients can get their arteries calcified. If you look at this radial artery is heavily calcified. So you can well imagine the state of the coronary artery. That's why we don't give a lot of calcium nowadays to CKD patients because of the risk of coronary artery calcification, the risk of having an MI. So we try to keep their calcium in normal range, don't give them extra. And we look at the phosphate also. The phosphate goes up in kidney failure.
So you multiply calcium with phosphate. If the calcium is 9 and phosphate is 7, then how much is it? 9 7 is 63. So this is high. So this means this patient will deposit his phosphate and calcium in the tissues. K2 का भी कुछ रोल लोग कहते हैं है इसमें. लेकिन we have to keep the PTH around 200 or in this range. Don't let it go too high or too low. Even that is dangerous. The bones become adynamic. And then if you look at the spine, there is a typical picture called rugger jersey spine. That in advanced disease, you have these bands. In between there is hollowness. Again there is so bands alternating dark white, dark white, dark white, dark white. So this is called rugger jersey spine. Sorry. हाँ जी, वो जो ऐसे वो जर्सी पहनते हैं रगर जर्सी स्पाइन तो अमेरिकन ये टर्म यूज करते हैं. So you get rugger jersey spine, you get brown tumors, you get calcification of arteries, you get osteoporosis. The tufts of the fingers they resolve, and there is extra osseous calcification in the tissues. Now, in how much time a patient from diabetes, sudden diabetes, goes to develop dialysis? And this progression is variable. From stage 1, it may take 20 years if it is type 1. But type 2 diabetic patients go into end stage earlier. They take 10 years to reach there. From stage 2, it's a bit variable, of course, in 1 and 2, but from stage 3, in 5 to 10 years. From stage 4, they may go early, and from stage 4, within a couple of years or 3 years, they can develop it. So you can tell the patient that in this much time, अगर उसका GFR आज 25 है, तो 15 कब हो जाएगा, एंड स्टेज कब हो जाएगा, 10 कितनी देर में कम हो जाएगा, 1 साल में. तो आप बता सकते हैं 1 साल बाद तुम डायलिसिस पे हो गए. उससे पहले दूसरी शादी जो करनी है कर लो, और जो भी तुमने करना है वो कर लो, या बच्चों की शादियां करनी है वो कर लो. तो फिर आता है कि आप अब जब डायलिसिस की स्टेज आ गई है तो अब क्या आपने उससे पहले क्या करा, प्री डायलिसिस केयर क्या है, ग्लूकोज कंट्रोल. अब हाइपो का रिस्क है, अब हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से हो सकता है, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनाइलूरिया से हो सकता है. कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन करनी है आपने, आपको पता है इसकी आर्टरीज खराब, मैक्रोवैस्कुलर, इसको कभी एमआई होनी, बेहतर है अभी चलते फिरते की एंजियोग्राफी करा लो, इससे पहले के क्रिएटिनिन 1.5 करा लो, ईटीटी करा लो, so that if these arteries are significantly narrowed, you should have some revascularization procedure, stent placement before the heart is damaged by it. Eye checkup and control. बैठे बैठे पेशेंट को हेमरेज हो जाता है, विट्रियस हेमरेज. आई स्पेशलिस्ट के पास जाता होगा, सॉरी यू कांट डू इट. So it has to be annually checked that there is no progression of retinopathy. If there is, you should have laser shots so that those leakage points are seen and doesn't go blind. So वो normal vision के साथ आई स्पेशलिस्ट के पास जाए, जब उसको नजर ठीक आ रहा है, अंधा हो गया फिर क्या करेगा. Vaccination, different type of vaccination, you should have it. कोविड की हो, बी की हो, इन्फ्लुएंजा की एनुअली वैक्सीनेशन, सारे. फुट केयर, अगेन पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, मस्ट लुक एट फंगस तो नहीं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज तो नहीं, इनग्रोइंग टोनल तो नहीं. प्रिजर्वेशन ऑफ फोरआर्म cutaneous veins, we must respect the veins in the body. वो veins बचा के रखनी है, especially left arm, to create a fistula. और फिर एंटीसिपेटेड डायलिसिस से 3 महीने पहले आपने उसका फिस्टुला बनाया, ताकि जब उसको एंड स्टेज हो जाए, सिम्टम्स हो, तो फिस्टुला रेडी हो, उसकी नेक में लाइंस न डालें.
हमारे पास एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जो लाइन्स के एक्सपर्ट हैं, हर तरह की लाइन जहाँ मर्जी डलवा लो। आर्टरी तो यूज है, वेन्स की बात कर रहे हैं, वेन्स की बात कर रहे हैं। इसलिए आर्टरी इसलिए यूज करते हैं आजकल के, इसमें आप जो पोस्ट एंजियो हीमाटोमा फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे बोन है ना, बड़ा इजीली आप कंट्रोल कर लेते हैं। जो फेमरल से करते हैं उसमें रिट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमस बन जाते हैं कई पेशेंट्स, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो वो तो करनी पड़ती है, ये आसान भी होती है, सेफ भी होती है, और कईयों के एनिज्म होते हैं नीचे ओटा में, वो काम खराब हो जाता है। तो ये सेफर है, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू राइट पे करें, लेफ्ट को बचा लें, लेफ्ट रेडियल आर्टरी को। मीन्स होता ही है ना, इंजेक्शन लगते रहते हैं डायबिटिक्स, एंटीबायोटिक, ब्लड सैंपल लेती रहती है नर्सें, वो हर वक्त टेस्ट करते रहते हैं। वेन्स कम्स फ्रॉम बोथ, बाय द टाइम यू नीड अ फिस्टुला, नो वेन्स। तो उसको डायबिटिक है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी कमिटमेंट यहाँ पे वेन को बचा लें, बाकी यूज कर। और डायलिसिस, अब डायलिसिस दो तरह का है, पेरिटोनियल है और ब्लडलेस डायलिसिस जिसको कहते हैं हेमोडायलिसिस। 5 year survival on dialysis in diabetics is 30%. Transplantation, kidney and pancreas, या फिर आइलेट सेल एंड किडनी ट्रांसप्लांट। आइलेट सेल ट्रांसप्लांट में वो आइलेट सेल्स लेके उनको पोर्टल वेन में इंजेक्ट कर देते हैं, वो आइलेट सेल्स जाके लिवर साइनोसाइड में बैठ जाते हैं, वहाँ से इंसुलिन। स्टेम सेल थेरेपी भी लोग करवा रहे हैं, फैशन है, पता नहीं उससे क्या रोल। आर्टीरियोवीनस फिस्टुला बनाया जाता है, आर्टरी के साथ वेन को जोड़ दिया जाता है। जब मेच्योर हो जाती है तो वेन ऐसे नजर आ जाती है, 2 नीडल्स लगाना आसान होता है, एक ब्लड लेने के लिए और एक रिटर्न करने। और दूसरी ये परमानेंट एक्सेस है कि यहाँ पे कैथेटर परमानेंटली डाल देते हैं, जिनकी वेन खराब है, आर्टरीज पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है, उनको ये आप लाइन डाल देते हैं, और इसके आगे 2 एंड्स हैं, एक आर्टीरियल के लिए, एक वेनस के लिए। होती है वेन में ही, लेकिन एक से लेते हैं, एक से रिटर्न करते हैं। और ये एक ज़ायद हॉस्पिटल का डायलिसिस सेंटर है जिसकी बात आयज़ाज़ कर रहे थे। यहाँ पे रोज़ के 200 मरीज डायलाइज होते हैं, और जगह नहीं है, वेटिंग लिस्ट है, पेशेंट्स पढ़ रहे हैं। और कितने डायलिसिस सेंटर आप खोल, क्या करेंगे? प्रिवेंशन इज व्हाट वी नीड। दूसरा डायलिसिस, अब ऐसे पेशेंट जिनकी एम्पुटेशन आ सकती, या जिनको वो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है या हार्ट फेलियर है, उसमें यू पुट इन अ कैथेटर इन द बेली एंड you put this dialysate in the belly, and after 6 hours you drain it in the back, and the patient is sitting, he has this fluid going in the belly, you are using the peritoneal membrane as the dialyzer, exchange is taking place, urea is coming out in the fluid that is being drained. So the patient is doing 4 exchanges or 3 exchanges of 2 liter fluid every day, and is doing it at home. It doesn't have to go to the hospital. So this is something which is now picking up in Pakistan. We used to do hundreds of return dialysis, but then somehow it got discontinued, non-availability of disposables. Don'ts in diabetic nephropathy: use of nephrotoxic drugs like NSAIDs and others. They are more prone to toxic effects. Use of radio contrast agents, you have to be very careful. Their creatinine can go up and damage to peripheral veins. Now we'll talk about the drugs which you want to use in diabetics. And you can see that in 5 drugs came out in 70 years. And then 13 drugs came in 25 years. So a lot of new drugs are coming. And this slide is important because some of your questions may be related to these.
that the GFR, now talking about metformin, you can continue to give metformin till the GFR is 35. तो 120 100 से लेके आप 35 तक you can continue to use metformin. But if patient comes to you who is not taken metformin before and his GFR is less than 35, he comes to you for the first, don't start metformin at that stage. So if it is the GFR is less than 30, you stop or you do not initiate because of the risk of lactic acidosis. It is not going to harm the kidney, but it can produce lactic acidosis in some patients. Although I have seen not more than 2 or 3 patients who developed lactic acidosis due to metformin. But you can use it in the GFR of 30 to 45, can continue. But if you want to do a radio contrast study in angiography or IVU or something, then you should stop. And then you can restart. Sulfonyl ureas, they have long half-life, they are not eliminated. So you can, you should avoid in CKD, but you can reduce the dose if they are not that. I mean, they should be avoided if GFR is less than 60. But glipizide is a short-acting one, and it doesn't require dose adjustment. Others you should be careful. DPP-4 inhibitors very frequently being used now. They have virtually replaced sulfonyl ureas in many patients. Linagliptin, naligliptin, sitagliptin, ceftazidime. The linagliptin recently became available and it requires no dose adjustment. The naligliptin, the 10-gliptin के नाम से आती है, no dose adjustment. Sitagliptin, vildagliptin 30 to 50 GFR, reduce the dose to half. Or if GFR is less than 30, reduce to 1/4. And if saxagliptin you use, if GFR is less than 50, then you use half the dose. Then come the TZDs. Pioglitazone is available. It requires no adjustment. It reduces insulin resistance. But the problem is that it causes salt and water retention. The patient will come back with edema and without it. So you have to be careful in those. SGLT2 inhibitor, dapagliflozin, empagliflozin. If the GFR is less than 30, you should stop it. Before this, you can give, and or you should avoid it if GFR is less than 30. GLP-1, exenatide, 30 to 50 GFR, used with caution, less than 30, stop. Dulaglutide and semaglutide, they require no dose adjustment. They reduce proteinuria. And alpha glycosidase inhibitors, less than 30, you should stop or you should avoid it. Now, a few words about SGLT2 inhibitors, their benefits on the kidney. They improve the mitochondrial and tubular autophagy that we talked about earlier. They stimulate the hypoxia and increase the erythropoietin through HIF alpha and alpha 1 receptors. So they improve erythropoietin. And uric effects and natriuretic effects. And so because of this, they control the blood pressure, they reduce the edema, they help the heart failure, and they increase cortical oxygenation of the kidney, and the net result is a functional reduction in GFR and blood pressure, which is helpful. So the cardiovascular outcomes are there with these SGLT2. The significant reduction of cardiovascular outcomes, especially heart failure. They slow the kidney disease progression and renal replacement therapy initiation. They do not cause hypoglycemia because they are not working through beta cells, or they are not insulin-like. They are just causing glycosuria because of the sodium coupled, glucose coupled co-transport from the proximal kidney. They reduce HbA1c and to reduce glucose absorption in the proximal kidney. Weight loss up to 5 kg sometimes has been seen, and the efficacy is reduced as GFR goes
below 60 because अब कम filter कर रहा है patient तो कम side effect होगा. And diuretics may have to be reduced because some patients come and say they have excessive thirst, they have lost weight. लेकिन ये आपको ज़ाहिर आप टेलर करेंगे ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड. पेशेंट हार्ट फेलियर में है, edema है, उसको बहुत फायदा होगा. There are only two risks involved with this. One is UTI. If the patient has UTI because of glycosuria, you stop the SGLT2 inhibitors, or the Fournier gangrene formation in male, or fungal vaginitis, genital tract infection in female because of glycosuria. So that these are the relatively sort of contraindications. So I'll just summarize in this slide what I've talked about in the management, diagnosis of diabetes, blood sugar control, target HbA1c around 7, blood pressure control less than 130 over diastolic less than 80, reduction of proteinuria with ACE inhibitors, ARBs, non-dihydropyridine calcium channel blockers. Silent heart disease is there, so you will do everything that you want to. You will give aspirin, you will give statins. This becomes diabetic toolkit. Every diabetic patient should get aspirin and should get statin in order to prevent this atherosclerosis progression. Smoking cessation. If there's anemia, you have to give erythropoietin and iron. Renal bone disease, you have to give phosphate binders in the form of calcium acetate or calcium carbonate, or non-calcium based phosphate binders are now available as sevelamer. You can use sevelamer. And you keep the PTH around 200. Vascular access timely. When you think that now the patient is approaching ESRD or GFR 15, then you ask him to get a fistula made. So in order to do that, you have to save his veins, the vascular access, and you have to talk about renal replacement therapy. Does he have a donor in the family? He can go for transplant. If he has a related donor, or he can go on bloodless dialysis, CAPD, or he can go on hemodialysis. Of course, CAPD is expensive and still not covered, I think, completely by the government, whereas the health card and other things are covering in many institutions, covering dialysis costs. And the public sector hospitals are providing free dialysis, and Dr. Irfan Elahi, one of the panel experts, is doing a lot of service, community service, by looking after the poor patients who cannot afford dialysis. It can in this field and deserves all the applause. And the other expert we have is Dr. Saqlain Haider, who's been trained abroad for vascular access, for putting permanent catheters, putting the tube lines, and he's an expert in this field. And lastly is the diet and drugs. What diet? हाँ जी, पूछें क्या पूछें सर? Low sodium diet, low protein diet. अच्छा, all patients with CKD जो है regardless of 0.8 से तो कम ही खाएं ग्राम पर के प्रोटीन. Normal person takes 1 gram per kg protein. अगर आप 80 kg के हैं तो 80 ग्राम प्रोटीन आप खानी चाहिए. मैं आपको अब प्रोटीन दो किस्म की है. फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, एक लो बायोलॉजिकल वैल्यू. लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन में आ जाती है ये आपके ग्रेन्स वगैरह और पल्सेस वगैरह वेजिटेबल. हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन में, फर्स्ट क्लास प्रोटीन में डेयरी है और पोल्ट्री है और मीट है. तो एग हो गया, मिल्क हो गया, वाइट मीट हो गया, फिश हो गया. और ये नॉर्मली अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो CKD एक दफ़ा आपने लेबल किया तो 0.8 से नीचे ले. अगर उसका CKD 3 में है तो वो 0.6 ग्राम पर के. अगर CKD 4 में आ गया तो 0.4 ग्राम पर के. लेकिन 0.5, 0.6 ग्राम यानी को 40 ग्राम के करीब प्रोटीन, रफली 40 ग्राम प्रोटीन में 1 कप दूध का 1 अंडा और 1 रोटी आ जाए.
तो टोटली रिस्ट्रिक्ट ना करें प्रोटीन, अदरवाइज पेशेंट डिवेलप्स मैलेज, या टाइमली डायलिसिस इनिशिएट करें और फिर उसकी प्रोटीन खोल दें। डायलिसिस पेशेंट रिक्वायर्स 1.2 gram per kg, 20% more than a normal person because of loss in the dialysis. So that person has to eat more protein that you take, who's on dialysis. Peritoneal dialysis patient requires 1.5 gram protein per kg. उसके प्रोटीन लॉस होता है, जब बैग से फ्लूइड ड्रेन होता है तो प्रोटीन लॉस होता है, उसको आप 1.5 गुना प्रोटीन देते हैं। ये तो प्रोटीन की बात। वाटर रिस्ट्रिक्ट करेगा अगर ओवरलोड हो जाता है, 2 गिलास पी लो, बाकी चाय दूध वगैरह मिला के, और अगर डिहाइड्रेटेड है या डीमा नहीं चाहिए कोई टेंशन नहीं होती है। बाकी रह गया वेजिटेबल्स, तकरीबन सारी ले सकते हैं, पक के किसी को एक्सेसिव न ले, रॉ वेजिटेबल्स अवॉइड करें, तो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो अवॉइड करें। फ्रूट्स में जो फ्रूट्स हाई इन पोटेशियम है, जिसमें टोमेटोज, पोटैटोज, स्पेशली पोटैटोज विद स्किन, बेक्ड पोटैटोज होते हैं, वो आप उसको छील लें, उसको पीस करके उसको बॉइलिंग वाटर में डाल लें 15 मिनट, पोटेशियम लीच आउट हो जाए, फिर उसके बाद उसको काट। टोमेटोज, पोटैटोज, सिट्रस, ऑल काइंड ऑफ सिट्रस, ग्रेप फ्रूट में थोड़ा कम होता है पोटेशियम एज कम्पेयर टू दैट, बनानास, डेट्स। एक केले में 7 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम होता है, जो एक टैबलेट के बराबर होता है। एग में भी होता है, लेकिन एग में प्रोटीन भी तकरीबन 7 ग्राम होता है एक एग में। तो 1 इंच बनाना जो है वो 1 मिली मोल या 1 मिली, 1 इंच बनाना जो है पोटेशियम। चेंज का बीन्स में भी पोटेशियम है, तो लेकिन बेरीज खा सकता है पेशेंट, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, वो ब्लूबेरीज खा सकते हैं। और वो फल, वो तो हर तरफ चार्ट्स अवेलेबल हैं, आप चार्ट निकाल के प्रिंट करके नेट से उसको दो, ये वेजिटेबल, ये फ्रूट्स खाने होंगे। फिर फॉस्फेट की रिस्ट्रिक्शन होती है, कि आप पेशेंट को कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स कम करो, तो फॉस्फेट एक्सक्रीट नहीं होता, फॉस्फेट और कैल्शियम मिलकर डिपॉजिट हो जाता है, तो फॉस्फेट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, लस्सी और पनीर, और वो सारा यू हैव टू कट डाउन टू हाफ अ ग्लास so that they don't develop hypertension. और बाकी light exercise patient should do aerobic exercise so that role of ketosterol is questionable. You have to completely restrict the protein with it. वो मरीज की डिमांड पे कई दफा, जैसे मरीज आपसे न्यूरोबियन भी लिखवा लेता है, इतनी कमजोरी बढ़ी है, तो मेरे भाई ने मैथी को बॉल के टीके लगवाए थे तो खड़ा हो गया, तो वो इस तरह की बातें बाज़ दफ़ा, यू नो, ऑल्दो देयर आर स्टडीज डन बाय डॉक्टर मिच इन फ्रॉम USA, who is a nutrition specialist, nephrologist, who has published in Kidney International the role of these keto analogs in CKD. But you have to watch hypercalcemia, hyperkalemia can develop because of, and metabolic acidosis can develop with the user. जहाँ में जाने पे है मदार कुव्वत हैदरी। मुझे पता है हमारे अम्बिया जो थे, जो इतने हजरत अली, हजरत हमजा वगैरह, वो क्या खुराक खाते, चरगे खाते थे, वो बारबेक्यू खाते थे, क्या खाते थे, इन पर दाल रोटी खाते थे, जौ का आटा खाते, खजूर मिल गई तो खा ली। You see, we are as a community very much diet conscious in the bad sense, that we very, हमारे पास only जो entertainment है that is खाना. So I think our body doesn't need, one should restrict
to 2 meals if sugar is controlled, or if you are not a diabetic or not. You should watch your weight. According, सबसे important बात तो weight है. We all tend to gain weight, except Dr. Tahir and Dr. Ali Saqlain. We all have put on weight. So it's very important to put on, not to put on weight and do exercise. And जो हमारे इतने इतने जबरदस्त हॉकी प्लेयर्स हैं और ये क्या बेचारे खाते हैं, गाँव से उठ के आ जाते हैं, उनकी इतना स्टेमिना होता है. तो आई थिंक ये बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन का इस्तेमाल कम होना चाहिए, फैट्स का इस्तेमाल कम होना चाहिए. जो लिनोलीक टू लिनोलिनिक एसिड रेशियोज हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, इसका ख्याल करना चाहिए. क्योंकि अल्टीमेटली how long are you going to live is how good your arteries are. अगर 20 साल की उम्र में आपकी आर्टरीज बंद हैं तो आप बूढ़े हैं, और अगर 90 साल की उम्र में आपकी आर्टरीज खुली हैं तो आप यंग हैं. तो I think that's all. Thank you very much for being patient. Sir. Please have your seat. और उसकी साइक्लर्स हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस के साइक्लर्स हैं, उनके ज़रिए वो घर पे हो जाता है. लेकिन अभी हमारे मुल्क में उसकी टेक्नोलॉजी नहीं आई. मशीन को ले भी आएगा, उसको रिपेयर कौन करेगा, उसके वो पार्ट्स कहाँ से मिले. तो अभी वो लोगों ने वैसे हीमोडायलिसिस मशीन घर पे रखी हुई कि वो अपना डायलिसिस खुद कर ले. बिल्कुल दे सकते. अगर उनको पोटेशियम नहीं बढ़ता तो उनको बेनिफिट होगा, उनको किडनी में भी बेनिफिट होगा, हार्ट में भी होगा, ब्रेन में भी होगा, क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन में भी तो स्ट्रोक की है. अब तो I think nowadays non-steroidals are not in fashion. People avoid it because of the toxicity, the gastric and renal. Now people use disease-modifying drugs like Lifora and like other जो आप इसमें Actemra वगैरह, ये जो आप COVID में methotrexate is you can use, लेकिन it has problems in the kidney sometimes. वो तो आप देखें ना, साइकोटिक पेशेंट लिथियम खाते हैं, उनके भी किडनी खाते हैं. वो तो हर जो chronic illness है, long term use of any kind of drug, you have to get. No, I don't think so. But COX-2 inhibitors are relatively less. Maybe the panel can answer that. there is also, some of the post-disturbing alarming that we have, right? So very pertinent question. मेरा ख्याल के जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक्स, that can be safely used. Tramol है, tramadol है, Oizili, Panadol, these are relatively safer options and then safe. तो वो आप यूज कर सकते हैं. बाकी तो जिस तरह सर ने कहा है कि डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, एनाल्जेसिक्स, non-steroidal, that should not be used. Same thing. These are all called non-steroidal anti-inflammatory drugs. These should be used with caution or should be avoided. तो आपने किसी को दी है तो आपको पता हो कि इसकी जो वेजोडाइलेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, जिनसे GFR मेंटेन होता है, वो उड़ जाएंगे. Once the vasodilatory prostaglandins are gone, then the vasoconstrictor prostaglandins come into action. They cause reduction in GFR. The patient's creatinine goes up, and one of the colleagues sitting here, his creatinine went up from a normal by just taking naproxen sodium, which is NSA. You have to be careful. I'm not saying you don't use it. You have to sometimes, but use it once, maybe for a day, two, but not in renally compromised. Then you can use that.
whether they are OPIs or non-OPIs, and then treat the cause of it. If somebody has advanced osteoarthritis of both the knees, better you should go for a replacement of knees. If he has gallbladder pain, then he should have a gallbladder. If he has arthritis, he should use Bifora, or he should use other stuff which are for rheumatoid arthritis. मैंने वो डोंट्स में लिखा था ना, डोंट्स इन डायबिटिक, और सब लोग सिस्टम के बगैर दवाई मिलने वाली बात है, इसको आई थिंक यू पीपल कैन टेक इट अप, द गवर्नमेंट के नो प्रॉमिसेस, तो मिल जाता है, जाके वो दवाई आपको तो पूछते ही जाता ही वो मेडिकल स्टोर पे है, कहता है सिर पीड़ हो रही है, 2 सेफ्रॉन ले लो, तो हेडेक के लिए सेफ्रॉन करते हैं, और तो प्रॉमिसेस सर एक और प्रॉब्लम अब आती है कि हर जो बड़ी फार्मेसीज हैं सबने फार्मासिस्ट वहाँ पे खड़े कर दिए हुए हैं एंड देर ऑल डॉक्टर्स, शाम को वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और सर ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की, मैं चाहूँगा डॉक्टर इरफान इलाही साहब से भी उसका पॉइंट में, जैसे सर ने कहा ना कि हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स और हॉकी के प्लेयर्स यहाँ बेचारे बहुत दूर दराज और पसमानदा इलाकों से आते हैं, और एक वक्त वो था जब उनकी जेब में पेप्सी पीने के पैसे नहीं थे, लेकिन जब वो थोड़ा सा लाइमलाइट में आते हैं तो फिर पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और उनके बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वो पूरे लाहौर के अंदर और शहरों में लगे होते हैं। सो हाउ detrimental is it to use these cola drinks and all that soda drinks as far as the general health is concerned, and especially in the patients on dialysis situation? Your take, Dr. Irfan. Thank you, sir. In the presence of Professor Zasman, it's very difficult to talk as sir is our mentor, our teacher, and उनके सामने इस तरह जिस तरह सूरज के सामने कोई छोटा सा या क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूँ या जहाँ पे भी आज तक जो सीखा है या आज तक जो भी कुछ हमने किया है उसमें सर की कंट्रीब्यूशन है। Even a single word which I can speak, it is because of his teaching. और सेकंड ये कि मैं सर I wanted to add इसमें कि my mother went to UK, वहाँ पे उनको सर दिल्ली जो है ना वो कोलाइटिस हो गया, स्टोन था एक, एंड दैट स्लिप्ड, और उसके बाद उनको पेनकेटाइटिस भी हो गया। तो हमने अपने मेडिकल प्रोफेशन में देखा है कि जो मोस्ट स्वेयर पेन है इट इज ऑफ पेनकेटाइटिस एंड बिलियरी कोलिक, बट शी वाज गिवन थ्रू आउट हर हॉस्पिटल स्टे पैरासिटामोल, he was not given डिक्लोरान एंड ब्रूफन एंड ब्रिक्सिन। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा हमारा भी फॉल्ट है, जब हमें एक ऐसी जिसको ब्रिक्सिन की गोली एक दफ़ा मिल जाएगी तो उसको फिर पैरासिटामोल से हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो हमारे पेशेंट्स का बहुत चेंज हो गया हुआ है कि दे वांट इमीडिएट एंड इंस्टेंट रिलीफ। हम जो जितने भी हमारे ये जिस तरह हम लोगों को न्यूट्रॉल फोर्ट और पैरासिटामोल और इस तरह के कॉम्बिनेशन दे रहे होते हैं उनमें मोस्टली हमें थोड़ा सा लॉन्ग टाइम देना पड़ता है और पेशेंट भी उसको इम्प्रूवमेंट भी आ जाती है और पेन भी बेहतर हो जाती है। और सेकेंडली अब पेन मैनेजमेंट में भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, कुछ ऐसे आर्थराइटिस जिनमें आप पेन की नी रिप्लेसमेंट हेल्थ की वजह से नहीं कर पा रहे या कोई, तो लोकल एनेस्थेटिक्स जितना जो है वो लाइंस और ये सारा इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो वैसे लोग हैं कि दे गिव लॉन्ग एक्टिंग जो थोड़े से एनेस्थेटिक लोकल लगा देते हैं, तो उससे भी पेशेंट को काफ़ी देर तक वो उनसे भी एक तो वो उसका बेनिफिट है। और दूसरा जिस तरह सर ने ये वाली बात की कि जो लाइफस्टाइल है इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सर ने भी एक बात एजाज साहब ने कही, मैं समझता हूँ बहुत डीप बात थी वो, कि जितने लोग हमारे बड़े गुजरे हैं, हम आमतौर पे हमारे पेशेंट्स जो हैं वो जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि खुराकें बहुत अच्छी थी। तो व्हाट आई फील के मेरे दादा जो हैं वो फैसलाबाद के पास खुड़ियाँ वाला है, वहाँ से लाहौर साइकिल से आता है, और खुड़ियाँ वाला से फैसलाबाद पैदल जाना 22 मील उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला कभी नहीं। लेकिन हमारे जितने पेशेंट्स हैं हम सब इतने डिपेंडेंट हो गए लिफ्ट के, कार के, और एक्सरसाइज के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। और एक ये जो हमारा वेस्टर्न लाइफस्टाइल जिसमें हम कहते हैं कि आपका ये जो कोलाज हैं, फास्ट फूड है, और जितना सर ने अपनी स्लाइड में बताया कि 2 ग्राम सोडियम हमने लेना है, तो आप अगर ये जितनी हमारी
ये जो कोलाज हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो तो बहुत ही बड़ा हेल्थ के लिए डिजास्टर है, क्योंकि सारा का सारा सोडियम लोड है। फिर अगर कोई डायबिटिक है और वो डाइट कोक भी ले रहा है तो उसमें बेशक ग्लूकोज अगर नहीं भी है, उसमें शुगर को कट डाउन कर दिया तो सोडियम लोड उतना ही है बल्कि जितना चीज उसमें नॉर्मल है। और इसी तरह हमारे जितने बेकिंग जो बेक हुए हुए आइटम्स हैं, इस वक्त आप देखें बेकिंग बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन है, हर कोई बेक कर रहा है, तो बेकिंग पाउडर जो है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो जितनी चीज़ें हम इसलिए पेशेंट को अगर हेल्थी डाइट में हम बताते हैं कि नान खमीरी रोटी की जगह आटे की रोटी जिसमें ना तो नमक डला हो ना मीठा सोडा डला हो, क्योंकि जब आप नान ले रहे हैं खमीरी रोटी ले रहे हैं तो उसमें भी आप सारा बेकिंग पाउडर जो डाल रहे हैं वो भी सोडियम का सोर्स है। और इसी तरह हम नमक की तो बात करते हैं, ये जो कोलाज हैं उनमें भी सारा वो सोडा वाटर उससे पहले डाल देते हैं, तो सोडा वाटर को भी छोड़ना पड़ेगा वहाँ पे। तो हाँ जी, ये खमीरी रोटियाँ और इनकी जगह जो प्लेन ब्रेड है और जो फाइबर वाली ब्रेड है वो बेहतर है। फिर इस तरह ये जो हमारा जो सारा फास्ट फूड है, बर्गर पिज़्ज़ा बेकरी का सामान, उसको कट डाउन करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक मैं और आपकी इजाज़त से एक बात ऐड करना चाहूँगा। भी देखिए, आई हैव सीन माय फादर डूइंग जनरल प्रैक्टिस फॉर लास्ट 40 ईयर्स। आपने जितना जिक्र किया था तो मुझे वो बताते हैं कि 1982 में जो मेरा 15 मार्च 1982 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो स्टार्टेड इस क्लिनिक ऑन दैट डेट। और उन्होंने पिछले 40 ईयर्स जो जनरल प्रैक्टिस की है, तो ये टोल्ड मी, वो कहते हैं कि मैंने आज तक अपना कोई भी मरीज 3 दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं रखा। तो ऑल्दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन होनी चाहिए, जिस तरह हमारे जनरल फिजिशियन की एजुकेशन, और इसके ऊपर मैं मुबारक दूंगा फैमिली कॉन को, मियाँ तारिक साहब को, कि ये बहुत अच्छी बात है कि जनरल फिजिशियंस जो हैं वो एक तो उनके एकेडमिक सेशंस हो रहे हैं और दूसरा इस डिफ़िकल्ट टाइम में उनकी एक सॉलिडेरिटी है। जिस तरह अभी सर ने ये बात की कि जी फार्मेसीज पर प्रैक्टिस हो रही है, जनरल प्रैक्टिशनर्स को जहाँ जहाँ पे कोई थ्रेट्स हैं फैमिली कॉन वहाँ पे स्टैंड करती है। तो ये एक इस सोसाइटी का होना बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है और एज है। और इसमें इसके जो जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी ये बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ फैमिली फिजिशियंस। लेकिन साथ ही साथ जो मैं ये वाला पॉइंट जो मेरा यहाँ पे कि प्लीज जो है ना, रेफर योर पेशेंट्स टू दोज कंसल्टेंट्स हु रिस्पेक्ट यू। My father has always done this। वो कहते हैं मैं 3 दिन से ज़्यादा I have never lingered on with any patient, उसको ले लेके तब तक आप चलते रहें। अक्सर हमें ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर जब हमारे पास पेशेंट भेजता है, और ये बात हमें सर ने बताई कि जब वो पेशेंट भेजता है वो कहता है हाँ ठीक है तुम जाके एक बार एजाजमन साहब को दिखा लो, लेकिन वो अब यही कहेंगे कि इसके गुर्दे वॉश होने, बिकॉज दे टेक द पेशेंट टू दैट पीक जहाँ पे वो रिवर्सिबिलिटी और उन सारी चीज़ों से गुजर चुका होता है। तो अच्छा जो जीपी होता है और अच्छा फैमिली फिजिशियन होता है, उसका पेशेंट जब किसी स्पेशलिस्ट को दिखा के आता है तो फिर उसी से पूछता है कि जी ये उन्होंने कहा है अब मैं क्या करूँ। तो वो जो आपको एक गाइडेंस मिल रही होती है, जो वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग है। मैं अभी तक जब मुझे कोई मरीज समझ नहीं आ रहा था मैं कहता यार एजाज साहब को जाके एक बार दिखा दिया। और इट इज़ सो काइंड ऑफ सर कि सर हमेशा इतना ऑनर करते हैं कि उसको कहते हैं यार इरफान जो कर रहा था ठीक कर रहा था, हाँ ये एक चीज़ बीच में करेक्ट कर दो। तो ये इट इज़ ऑल्सो हमारे लिए भी एक लर्निंग है, एक हेल्दी रेफरल। और उससे जो है ना जब आपको जो लर्निंग मिलती है फीडबैक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लेक्चर्स अटेंड किए, लेकिन जिस दिल से और जिस तरह डेडिकेशन से और जिस एंथुजियाज्म से डॉक्टर एजाज साहब ने आज हमें ये लेक्चर दिया है, मेरा ख्याल है कि दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस. Thank you very much, sir, for your kind participation, and I am also very much thankful to our worthy panelists. For the final comments, I would like to invite Dr. Tariq Mahmood Mia to please come on the dais to update you about the next coming FAMILYCON. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमने किडनी डिजीज के बारे में बेशुमार प्रेजेंटेशन बताई, लेकिन ए टू जी जितना प्रोफेसर एजाज साहब ने आज बताया और बड़े दिल से बताया और इतना तफसील से, तो मेरा ख्याल है कि उसका कुछ भी आप रिटेन कर लें तो ये आपके पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स का उनको भी बहुत मशहूर कि उन्होंने टाइम निकाला। हमारा क्या है, जब जा रहे थे गवर्नमेंट से भी बड़ी दफ़ा कहा कि ये जो रेफरल है और ये लाइजन प्राइमरी केयर टीचर और कंसल्टेंट ये बड़ा ज़रूरी है, और इट्स नॉट वन वे, इट शुड बी टू वे।
अपनी ओपिनियन दे के उससे क्या होगा मजीद लर्निंग होगी। अगर कहीं से कोई गलती भी किया तो उसको हम दोबारा रिपीट ना करें। एक तो ये था, एक दूसरे स्टैंडर्ड ला दिए। अगर थोड़ा सा उनका 10% आप स्क्रीनिंग पे लगा दें तो आपको डायलिसिस सेंटर बनाने ना पड़े। अगर हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग करते हैं और उनको अर्ली डायग्नोज करके उनकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, हमारे पेशेंट डायलिसिस, अब कितने डायलिसिस यूनिट बनाएंगे? तो उसकी रीजन ये और जो स्क्रीनिंग है वो मेरे ख्याल प्राइमरी केयर लेवल पे ही हो सकती है। लोगों की एजुकेशन, हमारे यहाँ पेशेंट आता है उसको नजला खांसी बुखार है, उसका बीपी चेक करते हैं वो 260 पे गया होता है, चलो डॉक्टर साहब सीधा मन कोई तकलीफ नहीं है, किसी मन में बुखार की दवाई, कभी रेंडमली चेक कर लें किसी की शुगर और वो इतनी हाई होती है, पेशेंट हमारा फील करता है कि जो बीमारी तकलीफ दे रही है वही बीमारी है, जो जिसने आज से 20 साल बाद तकलीफ देनी है उसको वो निश्चित नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि एजुकेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों का टाइम और फैमिली का हम एक चीज हमेशा बताते हैं कि टाइमली रेफरल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट और वो हमारे जितने भी करते हैं ये हमारा गाइडेंस जो है बड़ा जरूरी है। मैं आखिर में फिर उनका कैट्स फार्मा का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने पिछले 6 महीने का हमारा जो सेशन चल रहा है वो उसमें हमारा साथ दे रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां जो कि आपकी कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन में साथ देती है उनका आपके साथ है। आप तमाम आपका जो ऑनलाइन है उनका भी बहुत शुक्रिया, बड़े थैंक यू सर।